हाय गाइस। हमारे घर पे बहुत वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, तो हम इससे बहुत सारी यूनिक हाउस होल्ड थिंग्स बना सकते हैं फॉर डेकोरेशन। सो आज मैं एक डैमेज बॉटल से एक सुंदर सा फ्लावर पॉट। हाय गाइस, सबसे पहले बनाने के लिए इसको थोड़ा सा रोल कर लीजिए, बिकॉज़ ये नहीं तो अगर आप ऐसे इसको घुमाओगे तो ये घूमेगा नहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा फिक्स करके इसको रोल कर लीजिए लाइक दिस। ऐसा हो जाएगा। ये मैंने होलसेल में से परचेज किया था, बट ये somehow से डैमेज हो गया, तो इस वजह से मैं इसको सोच रही हूँ कि इसको मैं ऐसे यूज़ करूँ। मेरा भी अब रेडी है। आप इसमें फेविकोल भी यूज़ कर सकते हैं, बट फेविकोल थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऐसे आपको पूरे पॉट पे रोल करना है। आप कोई सा भी बॉटल यूज़ कर सकते हो, इसमें प्लास्टिक बॉटल भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कांच का किया है। कांच का थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए कांच का मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी, क्योंकि अगर इसमें कुछ फ्लावर्स या कुछ और आप फोटोज़ टाइप स्टफ कुछ पुट करना चाहो तो आप कर सकते हो ईजिली। और एक सजेशन है कि ग्लू गन यूज़ करते टाइम आप फैन या एसी कुछ बंद कर दें, बिकॉज अगर आप उसे ऑन करके रखेंगे तो बहुत जल्दी सूख जाएगा और आपका पॉट या कोई भी स्टफ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हाफ भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो हाफ करके यहाँ पे
अपनी पिक भी लगा सकते हो, एक फ़ोटो लगा सकते हो आप, या यहाँ पे कुछ डेकोरेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप कोई कोटेशन पुट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं आप इसके संग कर सकते हो। Now I am going to apply this white paint. Some creative with this.
आती हैं, आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी बहुत ईजिली। नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। आप इसे एज अ लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट लैम्प भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें फ्लावर्स लगाने तो फ्लावर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फ्लावर्स लगा के दिखाती हूँ। बहुत किसी भी बॉटल से, कोई कांच की बॉटल हो, कोई प्लास्टिक की बॉटल हो, आपको दोनों भी इसमें चल जाएगा।